कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और अर्बैनिक हॉल. सो एज प्रॉमिस्ड, एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो आपको पता है कि मैंने अर्बैनिक से 3 या 4 आउटफिट्स मंगाई हैं. सो आई हैव रिसीव्ड ऑल ऑफ देम. ये हॉल बहुत पहले आ जाती, लेकिन इसमें से मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की एंड द थर्ड वाज आउट ऑफ स्टॉक, एंड आफ्टर 5 days आई गॉट नोटिफिकेशन कि वो आ चुकी है. सो आई हैव टू वेट फॉर 1 more आइटम सो दैट मैं हॉल कर सकूँ. सो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. लेकिन अर्बैनिक की डिलीवरी टाइम्स हैव इम्प्रूव्ड एज जो मैंने लास्ट हॉल की थी. इफ यू हैवंट सीन दैट आई विल लिंक इट अप हियर एंड ऑल्सो डाउन. सो आपको देख सकते हैं उसमें एन ऑर्डर एंड आउटफिट एंड इट वाज लाइक रियली बैड. मैंने रिटर्न कर दी, बट आई एम हैप्पी टू से कि दिस हॉल इज गोइंग टू बी नथिंग लाइक दैट. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. सो फर्स्ट चीज़ जो मैंने मंगाई थी वो थी ये दोनों आउटफिट्स, एंड आई एम सुपर हैप्पी टू से कि एक तो डिलीवरी टाइम्स हैव इम्प्रूव्ड. पिछले बार इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 2 months, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. एंड इस बार इट टुक लाइक अबाउट लेस देन अ month, so I think that's an improvement. But the third thing came really fast. I think within 7 or 8 days. So as you know, हम सब SheIn का कोई ना कोई like alternative ढूंढ रहे हैं, and I've been to many sites, लेकिन I didn't find the vibe of SheIn. The closest site which is vibing with SheIn is Urbanic. So ये है, oopsies, what was that? Okay, some offs. तो ये जो था, these are the packets जिसमें ये आते हैं. It's nicely packed, and they have also given me this thanks for shopping with us 300 rupees code reward Facebook पे. I think this, and this is my invoice जो मैंने मंगाया था. Right. So the first 2 things जो मैंने मंगाई थी वो ये दोनों हैं, and I will tell you the not so great one first, and then I'll get down to the ones I really loved. तो ये ऐसे आते हैं in a bag like that, very similar to SheIn. And SheIn को alternative as usual सबके सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन for me I haven't really found it, but Urbanic is the closest. So ये है एक jumpsuit. I really like this blue print, and it's like looking, it's very beautiful. इसका कलर भी बहुत अच्छे से कैमरा पकड़ रहा है. So this is a blue full thing, और इसका जो this is what it looks like. इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ पहनना ही पड़ेगा. So I'll be wearing a sports bra or something inside it. It's got adjustable straps like these. वेल स्टाइल तो बहुत अच्छा है. इट्स वेरी बैगी. सो मेरे लिए तो ये लूज है, बट आई एम गोइंग विद द बैगी फिट. सो इसका जो फैब्रिक है, द स्टाइल इज रियली नाइस, बट द फैब्रिक इज नॉट गुड. इट्स रिमाइंडिंग मी अ लॉट ऑफ क्लब फैक्ट्री के वो जो चीप वाले लेगिंग्स थे, अ लिटिल बिट लाइक दैट. यही सेम फैब्रिक था उस ड्रेस का जो मैंने रिटर्न किया, बट दिस वन आई एम गोइंग टू कीप बिकॉज़ इट्स जस्ट फॉर $1000. सो इट्स लाइक ओके, नॉट दैट एक्सपेंसिव. ये 990 समथिंग का था. सो आई जस्ट गो विद इट बिकॉज आई रियली लाइक दिस स्टाइल. इसमें पॉकेट्स भी हैं एंड आई रियली लाइक इट. और ये था 990, लाइक आई जस्ट सेड, राइट? दैट्स राइट. So that's right, 990, and it's a very nice classy piece, and you can wear this with heels, you can wear it with a short jacket. इसको स्टाइल करने के कई तरीके हैं. It will be one of those versatile outfits. So this was the first one. The second thing, I loved this, like ये this is something really sexy, cute. Fabric अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, और मैं इसको यहीं में फाड़ दूंगी because I am completely capable of that. So I'll just remove this and there we go. So it comes with this, एक flap आता है, and this is a short crop. I love these kinds, like इतने अच्छे लगते हैं. They, if you have a flattering like mid figure, which I don't, but if you have it, so this is going to look so good on you. इसका जो print है, it is a very gorgeous leopard print like that. Can you see that? और सामने it's a tie up, so you'll have to wear something inside, of course, and this is how I intend to wear it, with something inside and like show off your figure. Girl, why not? So lockdown में अगर आपने बहुत sacrifices किए हैं, dietings की है, so this is the time to live it up a little with these kind of clothes. इसका फैब्रिक है, it's very similar. It's like georgette. I don't think it's georgette, but it's very similar to georgette, and I love it. ये it's looking nice and classy. cheap, किसी भी एंगल से cheap नहीं लग रहा है, which is like the one fear which I had, because even SheIn के कुछ कपड़े बहुत cheap लग सकते थे. So ये कितने का था? Where is the price tag? Okay, here's the price tag. Oh wow, $690. Now that's what I'm talking about. So this is so super cool at $690. इनके पास 2 colors हैं. So if you don't like really like this, the other one is a brownish leopard print. तो I think मुझे वो भी मंगा लेना चाहिए. So this is my second one. Okay, the third one is this. इसके लिए मुझे वेट करना पड़ गया था. This is a lovely pant जो मैंने पहले भी देखी थी, and it was out of stock. It went out of stock very fast. So उसके बाद ये फिर आ गई. After I ordered these, I had to wait 5 days, and then like in the middle of that being delivered, this guy
came back in stock and I immediately grabbed it up because look at the color, just look at this color, like of course, and it's so cute, funky. और ये जो है you know इसकी neon green tie string है, it's plain long and it's got, इसका जो bottom है it's like this, what do you call it, you know, it's a cinched bottom. नीचे लिखा है Rockmore. I intend to, I don't know if I will, but that's Rockmore for you. And I fell in love with the color of this. The fabric is superb, superb. Thick है, let me just see if I can give you a feel of that. So it's a nice thick fabric, बिल्कुल thin and transparent. Don't have to worry about that at all. And these trousers are like superb. तो मेरा पहला experience इतना sad था, लेकिन this is so good. I am definitely like going to like SheIn के बाद as like you, I have also been searching and searching for alternatives, लेकिन मेरा जो taste है वो थोड़ा variably sexy, classy है. So इसीलिए मुझे you know बहुत सारे ये जो I don't like overtly open dresses, and I'm not even liking many sites which I have been visiting, वरना मैं ज़रूर आपको बता देती. So अभी तक तो मुझे सिर्फ और सिर्फ Urbanic मिला है, but the moment if your style is also variably sexy, comfortable, cool, but like clothes you can wear, like you know, not just keep it in your wardrobe जो आप पहन नहीं सकते, nothing like that. So this is the Urbanic is the site I would like you know suggest. So this is the last piece, and this is all for my Urbanic haul this bar. As if at all I do order more things, I will let you know. Abhi right now because I haven't restocked a lot, so because I'm stocking them constantly. So that's it from me from Urbanic, and I hope you guys enjoyed this. ज़रूर इस वीडियो को thumbs up दीजिए and subscribe if you haven't already for more such videos. I make many such haul videos, and let me know if you have any more requests, and I'll see you guys soon in my next one. Bye.